Hi everyone. Okay, can someone confirm on the chat if I'm audible and visible? Okay. Hi everyone. Good evening. So welcome to your last Snap strategy session. It's going to be your final attempt. I know quite a few of you have given the first attempt as well as the second attempt or either of the attempts. या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो लास्ट अटेम्प्ट ही जो है वो दे रहे हैं. अभी तक आपने कोई और अटेम्प्ट दिया नहीं है. So this session is on understanding हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया है. उस हिसाब से what we have to do in the final attempt. It's going to be an overall strategy where we are going to use a mixture of the first two attempts and how to deal with the 60-minute slot. We are trying to optimize each and everything. Okay, so before we begin, जिन्होंने भी पहले दो attempts दिए हैं, how was your experience and what do you think were your pain points? Okay, so कुछ लोगों का slot 2 में कौन खराब गया है? Some have good attempts, some are confused about their marks. LRDI is taking a lot of time for a few of you. Okay, now we'll try to decode exactly how to look at the snap paper. आपका जो snap paper होता है, it's 60 minutes long. So I'll give you a few tips, a few pointers on how to ensure that you'll be able to maximize your score. अब देखो, आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों का कौन वीक पॉइंट है, किसी का एलआरडिया है, किसी का वीए पार्ट होगा, कोई पर्टिकुलर चीज कंप्लीट नहीं हो रहा है. There's someone who's able to complete exam way before time. So what are we supposed to do in such scenarios? Look, snap 60-minute examination, 60 minutes में you have to optimize everything that you have done. जो भी पढ़ा है उसको लेकर आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है. अब होता क्या है, कोई भी आप पेपर देते हो, तो इट टेक्स यू 2 to 3 minutes टू गेट इनटू द जोन. पेपर देना स्टार्ट करने के साथ आप आपका स्कोर मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. तो इन सच केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज, पेपर स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले, दिस इज अगेन अ टिप जस्ट टू ब्रिंग यू इनटू द जोन टू एंश्योर कि आपकी रीडिंग स्पीड एट पार आ रही है, यू आर वेल इन लाइन विथ वॉट एवर इज ऑन द स्क्रीन एंड यू आर एबल टू रीड इट प्रॉपरली. सो फॉर दैट आप लोगों ने क्या करना है, you should start by reading the instructions. I know everyone knows the instructions, खासकर जिन्होंने slot 1 and slot 2 दिया है. You will have the similar sort of instructions going into the paper, but आप स्टार्ट करने के 5 मिनट पहले जब वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो तो यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन द स्क्रीन. आप स्क्रीन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो एंड वंस द पेपर स्टार्ट्स यू डोंट हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ. आप पहले से यू गेट इनटू द जोन. अब once you start, some people will start with LR, some people will start with VA, some will start with cons. Again, it boils down to your own personal choice. But in the 60-minute time span, one thing that you need to understand is आप किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो. और कहीं टाइम वेस्ट कर दिया है तो टाइम वेस्ट के बारे में सोचकर आप वो टाइम वेस्ट नहीं करना है. जो क्वेश्चन है जितना फास्ट सॉल्व हो सकता है सॉल्व करो. नहीं लगता है कि जल्दी सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा, मार्केट फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन. They can attempt all questions of English and LR, but not more than 14 in cons. Look, अगर आप कॉन्ट्स में ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, so there is no sectional cutoff in snap. That's the beauty of snap examination.
ना यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको कोई सेक्शनल टाइमर देखने मिलेगा. इट ensures that you are able to maximize your score. आपका जैसे स्कोर आप मैक्सिमाइज कर सकते हो. इफ यू थिंक यू आर रियली गुड एट वीए, स्पेंड कपल ऑफ एक्स्ट्रा मिनट्स ओवर देयर, वहां पे स्कोर मैक्सिमाइज करो. कॉन्स में मत दो, एक क्वेश्चन कम होगा कॉन्स में, बट उसके जगह पे आप वीए में दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर सकते हो. तो टेक दैट इनटू अकाउंट. एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई एम एक्सपेक्टिंग at par with 1 and 2. I'm not expecting a huge deviance, क्योंकि they'll try to ensure कि it's on the similar lines. थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे कॉन्स थोड़ा सा लेंदी आया था लास्ट टाइम, तो यू कैन सी दैट कॉन्स थोड़ा इजियर साइड पे हो, और इस बार हो सकता है आपका एलआरडीआई वाला जो है वो थोड़ा लेंदी साइड पे चला जाए, बट अदरवाइज इट विल बी ऑन द सिमिलर लाइंस. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन क्रिटिकल रीजनिंग अगेन. आप सीआर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो ट्राई टू कवर ऑल द बेसिस. पेपर सॉल्व करते हैं, एंड इफ यू आर वेरी डाउटफुल अबाउट समथिंग, जस्ट मार्क इट फॉर रिव्यू एंड लुक एट इट इन द लास्ट 5 minutes. देन टेक अ बेट कि आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है. सिर्फ 22 मिनट टाइम बचा है अगर कॉन्ट्स के लिए, और उसके पहले आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दोस 40 क्वेश्चंस नमन, एंड वो 40 क्वेश्चंस में से इफ लेट्स से यू आर एबल टू गेट इवन 85% एक्यूरेसी, आपका तो भी 35 32 मार्क्स आ जाता है. रिमेनिंग 20 में से यू जस्ट नीड टू स्कोर 10. तो इफ यू थिंक आप किसी के साथ किया है, इट ensure that you're scoring at a higher rate than anyone else. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कॉन्ट्स में कम हुआ. कॉन्ट्स में 20 में से अपने 15 किए, कोई बात नहीं. When we say that it was an at par attempt, we are considering across sections. तो when you are going across sections, but कहीं ना कहीं आपका हो सकता है there is someone who scored way high than our benchmark in VA, but ended up scoring a little low in QA. At the end, it should come to a similar level because there is no sectional cutoff in SNAP examination. Unlike ZAT, NMAT और CAT examinations, जहाँ पे आपको sectional cutoff देखने मिलेंगे, SNAP में आपका वो टेंशन हट जाता है. अब आप जब क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, when you're going from one question to other, and let's say for example if you get stuck, अब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से, मैंने ज्योमेट्री की इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, ऊपर से तो क्वेश्चन इजी दिखा, बट सॉल्व करते हुए आई गॉट स्टक इन द क्वेश्चन. डोंट पैनिक, इट्स फाइन. 1 मिनट गया, 2 मिनट गया, कोई बात नहीं. उस क्वेश्चन को साइड में सरकाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट देयर एंड देयर. आप वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है ये पता चलने के बाद भी नहीं, अब मैंने 2 मिनट दे दिए हैं, अब काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, अब तो मुझे ये क्वेश्चन करना ही है, जिद लेकर पकड़ोगे तो और एक्स्ट्रा के 2 मिनट आप वेस्ट करोगे, जिसमें आप शायद और दो क्वेश्चन कर पाते, या आप और एक आधा मिनट दोगे जिसकी जगह पे एक क्वेश्चन कर पाते, जिस जो आपकी सही आने की गारंटी भी थी. सर लास्ट 5 मिनट अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा, लाइक काफी माइंड इधर उधर भागने लगता है. लास्ट 5 मिनट आपसे अच्छे से अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा, इफ यू थिंक आफ्टर 50-55 मिनट्स कहीं ना कहीं आपका एक फटीग आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू मैक्सिमाइज द लास्ट 5-10 minutes, टेक अ क्विक 10 second break within the paper. Take a 10 second break, just have a sip of water if you have a water bottle nearby you, or just close your eyes for 5 seconds and then again start solving. It's like आप खुद को re-energize कर रहे हो so that you will be able to solve the paper. Just stay calm, focused, know that you have done your preparation. 50-55 minutes में आपने काफी अच्छे से सॉल्व किया, और नेक्स्ट 5 to 10 minutes इज जस्ट अबाउट मैक्सिमाइजिंग दैट स्कोर एंड ensuring कि कोई मेजर गलती नहीं है. If you think you're expecting somewhere between 43.5 to 46 marks, you can expect a call from SIBM Pune and SMHRD. अब डिपेंड करता है कि ओवरऑल अटेम्प्ट देने वाले कितने लोग थे, दैट विल प्ले अ ह्यूज रोल, बिकॉज वी डोंट नो दैट राइट नाउ. वी आर कंसिडरिंग एवरीथिंग ऑन सिमिलर लाइंस एज पर एज लास्ट ईयर गोस. बट अगर पेपर गिवर ज्यादा है तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाए, कम लोग हैं तो हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, बट 43.5 शुड गेट योर कॉल फ्रॉम SIBM and SMHRD. And your backup colleges are SIIB and SIBM Bangalore.
अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? हाउ अबाउट VA QA and then LR? But like if you think you're good at VA QA and if you think LR is your weak point, definitely LR को आप लास्ट में रखो. बट अगर आपका ऐसा है कि नहीं, ऑल थ्री सेक्शंस आर इक्वल, आई विल सजेस्ट, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था लास्ट स्ट्रेटेजी सेशन में भी, गो थ्रू ऑल द सेक्शंस इन 30-40 मिनट्स जो भी आपसे डुएबल है, और टफ क्वेश्चंस को बाद में करो. दिस एंश्योर्स कि आपका एलआर का कोई इजी क्वेश्चन जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में है वो मिस ना हो जाए. तो यू डोंट मिस आउट ऑन द इजी पार्ट. इज देयर अ कोटा इन सिम्बोसिस? व्हाट काइंड ऑफ कोटा? तो फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज देयर इज, आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा, देयर इज पर्टिकुलर फॉर SC ST PWD एंड कश्मीरी इमिग्रेंट्स, एंड आई गेस देयर इज a defense quota in couple of colleges in symbiosis. उसके अलावा if you want anything, go to the college website and you'll find there is also NRI quota. Yeah, I think I addressed this question, backup wala. Yeah, if you think you're wasting a lot of time, आप क्वेश्चन फिगर आउट करने में काफी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट गोइंग फॉर क्वेश्चंस विच आर फैमिलियर टू यू. अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा फैमिलियर है, ये क्वेश्चन आप पहले देख चुके हो, फोकस ऑन दैट. आपको उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. डोंट ट्राई गोइंग ओवरबोर्ड, या डोंट गो इन अ सिचुएशन जहां पर आप सिर्फ इजी दिख रहा है इसलिए कर रहे हो. कभी कभी इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन इज इजी और डिफिकल्ट, एंड इट बॉइल्स डाउन टू वेदर यू आर फैमिलियर विद द क्वेश्चन पैटर्न और नॉट. Difficult to identify whether the question is easy or difficult. Just a second and let me open back the questions. Okay. SIB international, yes, SIB international business. Uh, my score ranges between 30 and my main issue is in QA. Any last steps can you recommend? I'll suggest, you don't have a lot of time anyways. It's what, 18 hours to your actual paper now? Less than 8, giving it in the first slot. So in that case, go through the formulas. आपको दिखेंगे at least 5 to 6 questions which are directly formula based. Target those questions. And if you think QA is a weak point, try giving extra significant amount of time for LR and VA कि आप स्कोर वहां से मैक्सिमाइज कर पाओ. You don't, ideally you don't want to be in a scenario जहां पर आप unnecessarily stuck हो when you know you cannot do it. Last minute strategy for cons to maximize marks, and then okay, last minute strategy to maximize your score in cons. Formulas, ensure कि आपके formulas clear हो, और जो basics है quickly revise your basics. Just go through the very base, जैसे आपने आज का अगर मैराथन देखा होगा. Try to cover all the basics, try to cover all types of questions, and ensure कि आपने जो भी whatever your strengths are आप उसको एक बार recap कर रहे हो, so that you are able to maximize your speed and at the end of the day maximize your score as well. Remember, it's all about your speed. How to control panic? Okay, that's a really good question, Aryan. uh, the major place where people face issue is how to control their panic situation. So to ensure that you're not panicking at any stage of the examination, you need to, there are a couple of tricks जो मैं करता था, might help you out. I used to hum a song, something that is not too distracting कि मैं गाने में ही focus हो जाऊं, but something that ensures कि I'm not panicking as well. Or I used to take a sip of water. पानी helps in calming you down in most scenarios. Have a sip of water and you'll be back on track. सर मैं एसआईबी का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, नहीं, अब कोई फॉर्म रीओपन नहीं होगा फॉर एनी सिम्बोसिस. आई हैव नेवर सीन देम डू दैट. If they do it this year, it will be good for you, but I've not seen them do that.
बट यू हैव अदर ऑप्शन, सो डोंट वरी। एक ऑप्शन गया तो कोई बात नहीं, यू हैव SIBM बैंगलोर, देयर इज SIDTM एंड अदर कॉलेजेस एज वेल। मुझे ओके, नाउ आपके 60 मिनट्स को आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे हमने मल्टीपल टाइम्स बताया, यू शुड गिव आइडियली 8 मिनट्स टू VA, you should give 25 questions, 25 minutes to your LR part, and जो extra 7 मिनट आपने बचाए थे VA में, that those 7 minutes will get add on bonus to your quants part. This ideally looks good, but this is not something that will go for each and every one of you. You have to be a little bit flexible. If you think you're really good at LR, और 25 मिनट्स LR में देने की जगह अगर मैं 30 मिनट्स LR में देता हूँ, I'll be able to solve at least 20-22 questions correct. 25 में से मैं 22 क्वेश्चन सही कर पाऊंगा by giving those extra 3-4 minutes. Please do end up giving that time. वहां पे आप 22 सही कर रहे हो, then you're getting 10 odd marks in PA, 10 12 marks in quants. You're able to go beyond the 42 43. The 43 is the benchmark we are having this year. You're able to cross the 43 marks benchmark. Cutoffs, I don't know the cutoffs of each and every college for each and every category. I'm sorry. SIDTM के लिए स्कोर 37 should be good, but still percentile has deviated a lot for SIDTM. ऊपर नीचे होता है काफी ज्यादा, तो I cannot give you a very sure short answer for it as well. It's a 1 hour examination. LR, cons, VA, फैमिलियर क्वेश्चंस ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपके पास जो स्नैप मैगजीन है, अगर आप मैराथन की लिंक ओपन करोगे तो यू विल फाइंड रोदा स्नैप मैगजीन इन द डिस्क्रिप्शन। ओपन दैट, इट्स अ गुड PDF, इट विल हेल्प यू विथ योर VA, जिसको भी VA में प्रॉब्लम है। या इट्स अ गुड कॉलेज, go through that. It will help you understand the different types of questions and practice CR is something we are not used to. हमने वो चीज कैट में भी नहीं की है, हमने कहीं और भी नहीं किया है। And CR is something that needs a lot of, what you can say, analytical thinking, which will help you. It's a critical reasoning section. Solve a good 20 questions tonight so that you are in the correct 20, at least 20, the minimum side. Ideally, solve 30 questions tonight so that you feel better prepared and more familiarized with those type of questions before going into the examination tomorrow. Or con side पे, go through the formula book. Whatever formulas are there from the different chapters, you should know the formulas. क्योंकि formula based अगर question आता है तो you should be directly able to apply it. If someone is giving you the word rodha, what are the possible combinations of the word rodha? If you're rearranging the letter RODHA, what are the possible combinations? 5 letters, 5 factorial. So you should be able to solve this kind of questions, and for that you need a good practice. अब इसमें दिया रोधा where O and A's, all the vowels are together. Still basic formula based question, but होता क्या है, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डर के वो चैप्टर को छोड़ देते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ओके दिस इज परम्यूटेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन, और ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो वी आर एबल टू सॉल्व इट। यही, देयर इज समथिंग एल्स, लेट्स से आपको कोई अलजेब्रा में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, कोई आपको टाइम एंड वर्क में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला अगर पता है तो यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। 30 सेकंड्स में देयर आर सम क्वेश्चन इन कॉन्ट्स वी कैन व्हिच यू कैन डू इन 30 सेकंड्स। वही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 1.5-2 मिनट भी ले लेते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेर यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। आई डोंट नो अबाउट SSBF dual degree program, I'm sorry Ruchi. um, and for the Aryan, for the interview process,
Rhoda will be there to guide you. We will walk you through. I guess we have already launched the GDPI program. There is a video on the portal. You can look at it. It will help you understand exactly how the GDPI system works at Rhoda. And I'll be there personally to help you out throughout the symbiosis process and for other colleges as well. We've got a good team. तो आपको उस साइड पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी एग्जाम पे फोकस करो. Once the exams are done, we'll start with the sessions. We'll start with your mock PIs, mock GDs. इतना कुछ होगा, इतना गाइडेंस देंगे. You won't feel underprepared at all. But right now, that is something that is not your priority. That I know GDPI is the most important thing to get selected in a college. एग्जाम सिर्फ आपको इंटरव्यू कॉल्स दिला सकता है, बट GDPI is what drives the factor that you're getting into the college. Before that, आपको you need to score in the examination to get to the GDPI point. Once you get into GDPI, we are there. We'll help you out. We'll help you understand how the whole system works, what factors you need to look at, and what will ensure that you stand out from the crowd. Is it Ash? Is it Ish? I don't know what. Yeah, I know the answers for factorial into two factorial. How is SIDTM for finance and analytics? Um, Mane, I've never heard a lot about finance and analytics for SIDTM, though I know someone who got in a very good package into finance and analytics, but I'll need to connect with a few students to get the overall review. Vinayak, please don't spam. मैं एक एक करके डाउट्स देख रहा हूँ. There are too many queries. And look, cutoffs can be subjective. Cutoffs can change depending on the number of students who are giving the examination. Also, depending on the difficulty level. But अभी तक जो पहले दो स्लॉट को हमने एनालाइज किया है, ऑन बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी फील इज 43 should be the cutoff for SIBM and SMHRD. But it can be like 43.5, 42.5. 1 से 1.5 मार्क्स का बफर तो हम कंसिडर करते ही है whenever we create an analysis. थर्ड अटेम्प्ट है आपका. इफ यू स्कोर 43 in the first couple of attempts, now you're free. You know at least borderline you have a chance of getting into the college. अब पूरा तो कुछ हो नहीं सकता है आपका. जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि इवन इफ यू गेट 40 marks, it's not like you're losing a lot. So you can take a little bit more risk to ensure कि आप शायद 43 को क्रॉस करके 45 46 स्कोर कर पाओ. ऑल ऑफ यू जिनका भी स्कोर 42 43 44 45 इस रेंज में है इन द फर्स्ट कपल ऑफ अटेम्प्ट्स, इन द लास्ट अटेम्प्ट प्लीज ट्राई टू टेक दैट एक्स्ट्रा रिस्क कि आपका स्कोर थोड़ा एक्स्ट्रा जाए. अगर पेपर देते हो कि आपको लग रहा है यार वापस से 42 का ही स्कोर आएगा, एक्स्ट्रा रिस्क लो. क्या होगा, पिछली बार भी 42 था, अभी भी 42 है. स्नैप कंसिडर्स योर बेस्ट अटेम्प्ट, so you're not losing out on anything. But by taking some extra risk, अगर आप 42 की जगह 45 46 स्कोर कर पाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंश्योर्स कि यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम SIBM SMHRD, एज वेल एज आपको GDPI में उतना ही 2 मार्क का बफर क्रिएट होता है. बिकॉज यू हैव स्कोर्ड दोज एक्स्ट्रा 2 marks, इट क्रिएट्स अ क्वेश्चन फॉर यू with compared to the other students. So do try and ensure that you're trying that you get what you want. And if you have received the kind of marks you want in the first two attempts, third attempt may be a bit more flexible. Try to take that extra risk. अगर 42 ही आने वाला था, रिस्क लेके 47 आता है या 38 आता है, 38 में आपका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि 42 तो पहले भी था. बट अगर 46 47 जाता है तो इट्स गिविंग यू दैट बेनिफिट, एंड दैट इज वर्थ द रिस्क. Yeah, you cannot afford to do silly mistakes in any of the MBA entrance exams. 46 47 Vinayak should be the 99 percentile cutoff, but SIBM का 98 से 98.2 percentile के बीच में आता है. That's why I'm expecting it to be around 43, but probably it can go. I told you 1.5 mark का बफर तो मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ कि पेपर काफी इजी है, ये मैंने भी सुना है. So it can be 44, but 46 47 is a bit too high. It should be बढ़ता भी है तो it should be 43 44, at max 45. It should not go beyond that. So you have try to ensure कि आप उसके ऊपर स्कोर कर रहे हो. Sanjay, you need to score some extra marks क्योंकि पेपर this year was quite easy.
2 साल पहले ये आपको कॉल दिलवा देता था जब 37 का कट ऑफ गया था, बट दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ टू बी 43, 44, and like Vinayak said, some other people are suggesting that it might go as 46 as well. So you can consider the cutoff to be anywhere between 43 to 46 marks. 39 से 40 पे कितना परसेंटाइल बनेगा? आई थिंक 95. नॉट नेसेसरी विनायक. 2 वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, 2 वाज स्टिल इजी. सिर्फ आपका कॉन्ट्स थोड़ा सा लेंदी था. तो when you are getting a lengthy section, you need to identify which questions you'll be able to solve. आपको ये ध्यान देना है दैट आप कहीं स्टक नहीं हो रहे हो. दैट्स द एक्चुअल ट्रिक. Q attempts from 11 to 16, 17. So to increase your attempts, Prabhu, what you need to do is first of all categorize what questions are solvable. 20 में से 10 questions easily solvable रहेंगे आपके लिए. And then जो थोड़े difficult side पे you can spend some extra time over there. Yeah, like I've heard the same. VRC and LR were the or in the easier side, whereas cons was a bit lengthier. Yes, when I've seen someone getting a borderline percentile, 98.3 percentile pe I've seen people getting into SIBM Pune. At the same time, I have seen someone with 99.8 percentile not able to convert SIBM Pune क्योंकि GDPI को seriously नहीं लिया था. So once you get a call from the college, once the examinations are over, GDPI plays the key role. I know someone with 99 point something percentile not able to clear SIBM Pune and SMHRD and have to settle for SIIB or SIBM Bangalore. There are cases like this as well. So in that particular scenario, आपको क्या करना है? You need to ensure कि GDPI का prep, once your exams are done, SNAP is done, ZAT is done, you're focusing dedicatedly on the GDPI part because that will decide whether you're fit for the college or not. Um, so Parna Roy, I think 2 minute में 50 questions you won't be able to check. हाँ, if you flagged a few questions which you think you need to go back to, mark for review किया है आपने किसी क्वेश्चन को because you were doubtful, definitely go and check those questions 1-2 मिनट डालकर. Otherwise solve extra questions if you can. That's something you have to take a call on. That's something we can probably think about once we convert all the colleges. Right now, first and foremost हमारा सबसे जरूरी काम क्या है? Focus on tomorrow's examination. For those who are giving other OMETs as well, focus on the OMETs part. Focus on the examination to get an interview call. And once you get the interview call, then we'll focus on converting them. And once we have all the converts, then we'll focus whether we want to get into the college. Uh, I'm only giving third attempt. Please give some tips for tomorrow. We've already started. We started with the tips. If there is any particular doubt, I'll address that. But we have had, this is our third strategy session. We have covered quite a lot in the past couple of sessions as well. ये session में भी you need to look at some key factors, what will help you drive your score and what will ensure that you stand out from everyone else. What was my GEPI score? I got my score 4 years back. I don't remember my GEPI score, but I believe 40 plus is what they consider a good score. So it should be somewhere around that. 35 to 40, there is some range. I don't know exactly what my score was. Uh, Abhishek, for the Roda Snap magazine, इसके पहले एक मैराथन सेशन हुआ है. Go to that session. In the description, you'll find a link. I'm not sure whether they've kept it in the. Okay, it's not in this session description link. So in the marathon, आपको description में दिखेगा. In the second, third line itself, there is a link for the magazine. From there, you'll be redirected to Google Drive, जहाँ पर आपको magazine दिख जाएगा. Sir, how is SIMC? Yeah, it's a very subjective. If you're asking me about a particular college, it's very subjective. अब कोई मुझे पूछता है, sir, how is SMHRD? It's a good college. But someone who has aspirations of IIM Ahmedabad, definitely I won't recommend SMHRD to that person. So it depends on what your priorities are and what you think your capabilities are.
Maybe someone does not have a good profile, cannot go into a very good college. This is the best shot they have. So you have to take each and everything into account. विनायक डज नॉट मैटर कितने लोग पेपर दे रहे स्लॉट 2 स्लॉट 3 में. इन स्नैप एग्जामिनेशन गाइस, तीनों स्लॉट का आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाता है. लेट्स से देयर इज समवन हु स्कोर्ड 45 मार्क्स इन स्लॉट 1, 42 इन स्लॉट 2 एंड 46 इन स्लॉट 3. उसका फाइनल स्कोर 46 कंसिडर होता है. एंड देन सब स्टूडेंट्स का, फॉर एवरी स्टूडेंट अ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड. सो योर बेस्ट अटेम्प्ट इज कंसिडर्ड एंड देन द परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड. इट्स नॉट कि आपका ये देखा जा रहा है कि फर्स्ट स्लॉट का अलग परसेंटाइल आ रहा है, सेकंड का अलग आ रहा है, थर्ड का अलग आ रहा है. दैट्स नॉट द केस. आई एम स्कोरिंग 30 roughly the same. From what I have heard, the Roda snap mocks this year were at par with snap level. तो आप जो भी रोदा मॉक्स में स्कोर कर रहे हो, एक्सपेक्ट द सेम मार्क्स. अगेन एग्जाम का एनवायरमेंट विल क्रिएट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. सम पीपल थ्राइव इन द प्रेशर, तो कुछ लोगों का स्कोर बढ़ जाता है. एंड सम पीपल पैनिक, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आ जाता है हमारे पेपर में. तो फॉर दोज पीपल स्कोर माइट डिप बाय 2-3 मार्क्स. तो हाउ यू कीप योर काम एंड हाउ यू कीप योर कूल विल बी द ड्राइविंग फैक्टर एट द एंड. SIBM पुणे एकेड्स आपके शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंसिडर नहीं करता है. इट क्रिएट्स अ फैक्टर ड्यूरिंग द GDPI राउंड. इफ यू स्ट्रगल विद दैट क्वेश्चन प्लीज स्किप इट. एंड में टाइम बचता है तो जाना वो क्वेश्चन के पास. इफ देर इज अ पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से आई नो आई एम नॉट गुड विद सीरीज, व्हाई वुड आई वेस्ट टाइम इन दैट, स्पेशली जब टाइम इज मनी इन स्नैप. स्नैप एग्जाम में टाइम इज एवरीथिंग. What you need to do is skip that question. End में if you think you're left with time and the question was easy, then go back to the question. Yes, Harsh, it's possible. नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, चाहे स्लॉट 3 कितना भी डिफिकल्ट आओ, कितना भी इजी आओ. देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन इन स्नैप एग्जामिनेशन. योर बेस्ट स्कोर अक्रॉस ऑल 3 अटेम्प्ट्स इज कंसिडर्ड. Okay guys, so we'll take last 2-3 doubts, post which we'll end the session. And I'd prefer if the doubts are not around cutoff. Cutoff can vary a lot. We have already addressed those. आपको cutoff के regarding और जानना है तो tomorrow we'll have an analysis session post your snap attempts, जहाँ पे we'll try to discuss about the cutoffs what we are expecting this year. But let's not focus on the cutoffs right now. Uh, First of all, storyteller, focus on not doing those silly mistakes. When you're solving, please solve with a little bit extra attention and try to ensure you are looking at all parameters. And second thing that you can do right now is, you know, you're scoring 42.75 marks. Take that extra risk, जिसको बोलते हैं आर या पार वाला सिचुएशन है आपका. यू आर एग्जैक्टली एट द बॉर्डर. इफ यू नॉट डू वेल इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो द एक्स्ट्रा रिस्क इज वर्थ फॉर यू. नहीं, स्नैप आंसर की नहीं मिलती. इनफैक्ट स्नैप डज नॉट रिलीज इट्स पेपर. जैसे कैट का आपने रिस्पॉन्स शीट देखा है, जैट का भी रिस्पॉन्स शीट आएगा, स्नैप का रिस्पॉन्स शीट नहीं आता. यू डोंट नो व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग इन स्नैप. So that is not at all going to be a factor at the end. LOD, it will be at par with slot 1 and slot 2. Little bit of deviation, maybe 5 to 10%, it can get bit easy. Cons can become a bit more easy to solve, not as lengthy questions. And it can have an effect where LR is getting a bit lengthy or VA is getting a little tricky. But overall, the difficulty should be on the similar lines. SIDTM is a decent college. Don't worry, we'll have a separate session once the calls are out on exactly where all the colleges stand and how you should be selecting your college, what parameters you should look at. Palak, 99 plus percentile, you should be targeting a score of around 46-47 marks. Okay, guys, it was great to have you all. You were great audience. All the best for your last attempt. Hope to see you guys join my alma mater.
I'm pretty sure you'll do well. Have faith in yourself, be calm throughout the paper, and if you have any queries, anything, have belief in yourself. That's going to be the key factor. Have a belief in yourself because we believe in you. We know you can do it. You have done the hard yards, you have prepared well. It's just about being in the right mindset for the last 60 minutes. Just go kill it. All the best, guys. Thanks for having me. See you tomorrow for the analysis.